this session. Let me start the recording for this session. We all are doing this recording so that anyone who by any chance miss out this extremely important session shall get to have the glimpse of this session. By the way, the idea here is to understand and connect with all of you. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इस कोर्स में 100 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन करा है. बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं भी कर रहे, विच इज ओके. इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, पैशन, and it's all about excelling in your skill. So this initiative by Public Speaking University, which is our Facebook community, I have created this initiative to make all of you learn the most important skill in the world now, which is public speaking. And I'm on a mission to create 1 million public speakers by 2030. So I'm absolutely excited and ready to help each one of you and get the best out of your journey. तो हम लोग शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि आप लोगों का एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा रहा है. इट्स बीन 7 days इन द जर्नी सो फार. तो वन बाय वन आप में से कोई भी स्टार्ट कर सकता है. आई कीप इट वेरी ओपन, कैंडेड. You will get to know what kind of person I am very, very soon, as and when the conversation will progress. And I'm sure some of you are already getting vibes what kind of person he is. Apart from that, हम लोग 4-5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जिसमें कि मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ. So just to apprise you, we have people joining from London. Hi, Emmy. Good to see you. Hi, sir. Good to see you too. So we have people from Karachi, Pakistan. Pakistan, there is a बोल रहा हूँ मैं. We have people from Sri Lanka, Nigeria, Canada, then Philippines, and Dubai as well, and many other states of our country. Okay, so I'm all excited to have conversation with each and one of you. सबसे पहले आप में से अपना एक्सपीरियंस कौन बताना चाहेगा कि आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका अभी तक का जर्नी कैसा रहा. 7 days हो गए हैं. आप में से कितने लोगों ने 7 days लगातार वीडियो बनाए हैं? जस्ट गिव मी अ वर्चुअल थम्स अप like this. A virtual thumbs up. If you have made the videos for all 7 days, just give a virtual thumbs up. Fantastic. Amazing. So most of you have made the videos for entire 7 days. Kudos to each one of you. अब मैं आपसे one by one interaction करना चाहता हूँ. I am inviting anybody to just interact with me. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आपका अभी तक का तजुर्बा कैसा रहा है? पब्लिक स्पीकिंग यूनिवर्सिटी के इस 21 days ऑनलाइन स्पीकिंग कोर्स में. तो आप में से कौन स्टार्ट करना चाहेगा? स्टेफनी wants to start. Stephanie DeMello, over to you. Good evening, sir. So Good I evening. personally feel that the experience is great because I've never really worked on anything for so long. Like I usually give up on things very easily. I'm like, 2 दिन का है, 3 दिन का, I'll do it. But this 21 days course is like a big commitment for me personally. And I actually sit down every day. I scroll through Google and, I make it a point that I search the information that, really suits my topic. And that's been really amazing. Thank you. Superb, superb, awesome. Good to have you, Stephanie. Who's next? Who want to speak? Shall I? Payal? Go ahead, Payal. Yeah, actually for me, initially it was very tough. I thought that daily I have to make first I have to write the content and then make the videos. It's going to be very tough. And to be very frank, for the first day, I searched on the Google also. But जैसे पहले फिर उसमें there was nothing from the internet. From second day onwards, it was like कि हाँ मेरे daily के schedule में I am getting so much to say. And it's being getting appreciation also. Otherwise, I was always like कि कुछ बोलना है, then you have to Google. और अभी मैं बिल्कुल गूगल नहीं कर रही हूँ. मे बी शायद आज के टॉपिक के लिए थोड़ा करना पड़े, बिकॉज आई डोंट वॉच द कार्टून्स एंड ऑल्सो दैट्स व्हाई. बचपन में भी नहीं देखी. तो इसका भी एक तरीका बताता हूँ. आप अपने टीवी चैनल पे कोई भी एक कार्टून ध्यान से देखो 15 मिनट बैठ के, और आप रेजोनेट करो कि एक्चुअली में मेरे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो इसमें से कोई कैरेक्टर कर नहीं. एक्चुअली 2 कैरेक्टर्स फिर आए माइंड में, बट उन कैरेक्टर को थोड़ा और स्टडी करना पड़ेगा. बट इट्स रियली गुड. मैंने कभी नहीं सोचा था दैट इन 2 hours टाइम, मतलब आई एम डूइंग माई वर्क ऑल्सो, अदर थिंग्स, आई एम मैनेजिंग किड्स, और उसमें से 1-2 घंटा बीच में निकाल के आई कैन मेक द वीडियोज, write the content and then make the videos. Means this is really, once I'm getting confidence, the confidence which I've lost, that I'm gaining back.
दिस इज ऑसम। तो ऐसा है कि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं आपको बहुत ऑथेंटिक तरीके से पब्लिक स्पीकिंग करना सिखा रहा हूँ। मैं आपको कोई कंटेंट रटने के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं आपको कंटेंट सर्च Correct. करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो। बिकॉज Yes. आपको पता है क्या है, जो कंटेंट जनरेशन मशीन है ना, वो Hmm. बाहर नहीं है, Correct. वो आपके अंदर है, यहाँ पे दिल Yes. में आपके। True. वो जी जगा रहा हूं मैं आपके अंदर। Hmm. अगर वो जा गई ना, उसका करंट आ गया आपके अंदर, तो आप कहां से कहां पहुंचोगे, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। उसी की फिराक में हूं मैं। ऑल द एक्चुअली बेस्ट। Thank you. हाँ Hi, sir. सतनाम, सतनाम कुछ कहना चाह रहे हो? आई कपिल, आई कम टू यू। सतनाम, यू वांट टू से समथिंग? यस यस, मैं भी ये चीज़ बोलना चाहूँगा सर कि मैं जब भी आपको टॉपिक देते हैं, दो मैं पिछले 2-3 दिनों से नहीं वीडियो बना पाया जस्ट बिकॉज आई वाज इन दिल्ली एंड सब बिजी विद सम अदर टास्क प्रोफेशनली, सो ट्रैवलिंग वगैरह भी हो गई, उसकी वजह से नहीं हो पाया। बट यस, आई फील दैट व्हेनेवर यू गिव अस टॉपिक टू टॉक, आई रिलेट दैट टॉपिक टू माय लाइफ जर्नी, दैट जो भी मेरे साथ कुछ वैसा इंसिडेंस हुआ है लाइफ में कि जिसने मुझे वो चीज याद दिलाई है, आज तक याद रही है, क्योंकि कोई कोई बात होती है जो हमेशा जिंदगी भर पूरी याद रहती है, हर बात नहीं याद वो रहता। स्कूटर वाली बात थी आपकी जो। हाँ जी। अब देखो तो वो आप इसका देखो कमाल देखो सतनाम, सॉरी टू इंटरवीन। आपने वो स्कूटर वाली कहानी अपने उस वीडियो में सुनाई, आज उस बात को 4 दिन हो गए, लेकिन मेरे माइंड में फिट कैसे बैठ गई? जी मैं तो रोज के 80-100 वीडियो एग्जामिन कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कम कर से रहे कम हैं। 10 सेशन करता हूँ रोज के मैं। कम से जी कम जी 20 लोगों से मैं मिलता हूँ, कम से कम 2 से 3 नए लोगों से मिलता हूँ मैं। तो एग्जैक्टली मेरे सर, मेरे मेमोरी में कैसे आ गया वो स्कूटर वाला इंसिडेंट? मालूम है क्यों? क्योंकि वो दिल से था, वो सच्चा था। क्योंकि वो आपकी पर्सनल लाइफ है, मुझे इंटरेस्ट है, मेरा ब्रेन इंटरेस्टेड है आपकी पर्सनल लाइफ खोजने में। आपने बताया, मैंने सुना, मैंने रजिस्टर करा। जी 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 दैट इज द पावर। जी। एंड जो एक दिन ना मैं रात को ऐसी नेगेटिविटी वाला जो टॉपिक दिया था ना सर, मैं उसके ऊपर बैठा सोच रहा था। यकीन मानिए 1.5-2 घंटे मुझे लग गए, मैंने कम से कम 50 वीडियोस बनाई उसमें कि मैं 2 मिनट का स्लॉट बना पाऊं, मैं नहीं बना पाया और इतने मेरा टाइम निकल गया सारा। आई वाज लाइक कंप्लीट लॉस्ट कि मैं उसके ऊपर क्या बोलूं, उस चीज के ऊपर, नेगेटिविटी के ऊपर। आई डिडंट नेगेटिविटी के ऊपर? गूगल, अच्छा। मतलब तो आप ऐसा होता है कई बार ना, अपने ब्रेन को अलर्ट करना होता है। आप नेगेटिविटी ऊपर यही बना सकते थे टॉपिक को कि मैंने अभी 50 वीडियो अटेम्प्ट कर लिए, ट्राई कर लिए, लेकिन मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आया। लेकिन यही नेगेटिविटी थी कि मैं शायद अगर अब टॉप वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मैंने इसको त्याग दिया, और ये पॉजिटिविटी है कि मैंने वीडियो बना दिया। ओके। तो एक्चुअली में क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है। देखो आपने मुझे अभी बताया, मैंने अभी कंटेंट बना दिया, ये जी प्रेजेंस जी ऑफ माइंड है। ये बड़ी किलिंग चीज है। ह्यूमन ऐसा है, ह्यूमन साइकोलॉजी में बड़ी पावरफुल चीज है। एमी वुड एग्री टू दिस। ये बड़ी पावरफुल चीज है हमारे पास कि हम अगर बहुत ध्यान से कोई चीज ऑब्जर्व करेंगे ना, जी वो बड़ी पावर हो जाती है। मैं आपको एक इसका एग्जांपल देता हूँ, वॉइस मॉड्यूलेशन। काफी लोग मेरे से पूछते हैं, सर ये वीएम क्या होता है, वीआर क्या जी होता है? जी 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 लॉट ऑफ यू हैव आस्क्ड, है ना? तो मैं एक बारी क्या है, मैं एक बारी बालकोनी में खड़ा हुआ था, और मैं ध्यान से ऐसी ना स्पैरो की आवाज सुन रहा था। ये लॉकडाउन की बात है अभी। और मैं जब स्पैरो की आवाज सुन रहा था, धीरे धीरे मैंने ध्यान देना शुरू करा, और मैं ध्यान देता गया, देता गया, देता गया। मेरा कनेक्शन एकदम हो गया, अरे वॉइस मॉड्यूलेशन तो इस स्पैरो के पास भी है। अब मैं सोच रहा था ये स्पैरो के पास वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे आया? फिर मैंने इस पे ध्यान देना शुरू करा, मैंने देखा यार पानी की आवाज में वॉइस मॉड्यूलेशन आ रहा है, वो टैंकी में से पानी गिर रहा है छत पे, उसमें भी वॉइस मॉड्यूलेशन आ रहा है। फिर मैंने वो आवाज देखी 2 दिन बाद, गड़गड़ गड़गड़ गड़ बादलों की, इसमें भी वॉइस मॉड्यूलेशन आ रहा है। तो मैंने एक चीज पकड़ ली वहां पे। मैंने मालूम है क्या पकड़ा? मैंने पकड़ा कि यार नेचर हमें वॉइस मॉड्यूलेशन खुद सिखा रहा है। नेचर को वॉइस मॉड्यूलेशन पसंद है। तो जो चीज नेचर को पसंद है, जो चीज नेचर से निकल रही है, जो चीज नेचर में अवेलेबल है, वो हम ह्यूमन बीइंग कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं यार? इसलिए तो वॉइस मॉड्यूलेशन से हम सब लोग कनेक्ट हो जाते हैं। देखो मैं अभी आपसे कैसे बात कर रहा हूं, मैं वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल कर रहा हूं, और कनेक्ट भी हो रहे हैं सब लोग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वॉइस मॉड्यूलेशन एक्चुअली हमारे आसपास ही है। तो आपने जो बात बोली कंटेंट ना मिलने की, उसका आंसर यही देना चाहूंगा मैं कि हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ी खतरनाक है। थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड में आ जाए, स्टेबल हो जाए ना, तो बहुत कंटेंट मिल जाता है। एनीवेज, आई विल कम बैक टू यू। थैंक यू सतनाम फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू थैंक यू। So what is VR? हाँ यस कपिल प्लीज। So what is VR? वीआर इज वॉइस रेंज। मैं आज बताऊंगा ये वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस रेंज होता क्या है,
इसने नाक में दम कर रखा है, मैं लिख लिख के परेशान हो गया, आप कर करके इसको ठीक नहीं कर पाए, लेकिन आज हम ठीक करवाएंगे। आज मैं बात करूंगा। कपिल, आप स्पोर्ट्स कोच हैं, आप क्या सिखाते हो? Sir, I am into nutrition, yes, sir. So I'm not a coach, but I'm a learner. I'm into that. तो आपका अभी तक का सफर कैसा रहा कपिल? सर मैंने 4 डे को ज्वाइन किया था, आई मिस 3 डेज, मुझे लेट पता चला। एंड सर इट्स बीन अमेजिंग। मैं जब कंटेंट जब टॉपिक आता है तो पहले तो थोड़ी देर समझ नहीं आता क्या लिखना है क्या लिखना है। तो व्हाट आई डू, आई स्टार्टेड राइटिंग व्हाटएवर कमिंग टू माय माइंड, और जब वो 80% हो जाता है तो ड्रेसिंग करने के लिए मैं थोड़ा नेट सर्च करके 2-4 कोई कोट्स वोट्स और वो डालता हूँ। ठीक है। और तो आज तो कार्टून वाला कैरेक्टर में मजा आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखना है, पर मैंने उसमें एक चैलेंज लिया। मैंने कहा यार जब हमें एक चैलेंज लेके कुछ ना कुछ तो निकालना ही है, और अब लिखने लगा और बनाया तो रुक ही नहीं रहा है, वो चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है। टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी, जेरी नेवर गिव्स अप। यस सर। विक्रम बेताल, हाँ जी, विक्रम नेवर गिव्स अप। राइट सर। ऐसे ही अभी आ गया, मैंने बोल दिया यार, मेरे को ध्यान नहीं। और हाँ जी, मतलब 2 टॉप वीडियो तो बना सकते हैं अब हम। राइट सर। और And सर I'm, नए and I'm sure there are many characters to it. राइट सर। Correct, sir. So it's been nice journey sir, thank you. Cheers to that. I'll come to you. Okay, Can I great. share? Yeah, Dharmendra, please. So first of all, thank you very much for this platform. So 2-3 things I would say that really amazing, that the topic which you give, because earlier I also participated in such a challenge, but the topic which you give, this is basically connects to the person individual's life. That is the amazing. And second, the feedback what you give. Usually what happen, people give yes very nice video, this that they only appreciate, but they never give feedback what need to be improved. So that is something amazing, and I'm looking forward from you because you identified my problems, which is actual problem. Those pronunciations, sa, sa, ja, za. So those things, and you also asked me to make video in Hindi. So I'm looking forward to get feedback from you, because this is also my question whether I should create video in English and Hindi. So many people advise me to go for Hindi. So that is what I want. At the end of this 21 days, I want the decision whether I should go with Hindi or अरे English. And ऐसा है सरमिंदर, सुनो, 21 डेज में रुकने की जरूरत तो है नहीं। लाइफ बड़ी फास्ट है, जीना मिलना पता नहीं होता कोई लाइफ का। अभी ठप्पा लगा रहा हूँ। ऐसा होता है कई चीजों में ना, गुरु और मेंटर और टीचर होता है, मोहर लगाता है। अभी मोहर लगा दे, अभी कर दे खत्म, कर दीजिए, अभी फाइनलाइज कर दे। ऐसा है, देखो हिंदुस्तान को हिंदी की जरूरत है। इंग्लिश तो बहुत लोग बोल रहे हैं यार, मैं भी इंग्लिश अच्छी बोलता हूँ, आप भी इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग इंग्लिश अच्छी बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश सीख करके बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। मैं तो कमाल हो गया, देखता रहता हूँ। पहचान ग्रुप के कुछ बच्चे हैं यहाँ पे। ऐसा है, देखो हमने पब्लिक स्पीकिंग में एक चीज समझनी है। हम जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैंने आज कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग का डिफरेंस बताया था। आप लोग मेरे ऑडियो सुन रहे हो ना? मैं आपके लिए बनाता हूँ वो। तो उसमें डिफरेंस मैंने यही बताया था, हम जब कम्युनिकेट करते हैं सामने वाला उसको डिकोड करता है। मैं एनकोड कर रहा हूं, वो डिकोड कर रहा है। मैं बता रहा हूं, वो समझ रहा है। तो उसमें लैंग्वेज का क्या महत्व है? जब बात समझने की है तो लैंग्वेज का कोई महत्व ज्यादा नहीं है। अगर मुझे वो छत पे बैठे हुए पंछी की बात समझ में आ जाए कि उसको भूख लगी है, मैं अपने घर से उठ के जाऊंगा, उसको खाना डालूंगा, वो लैंग्वेज कंप्लीट है। ना उसने बोला ना मैंने बोला। बात समझ में आ रही है? मोनी आप म्यूट करो। हाँ ठीक है, मैं म्यूट कर देता हूँ। ऐसे देयर इज अनदर लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड विच इज द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। ये मैं गहरी बात कर रहा हूँ, आपको दिमाग में फिट हो जाए अगर। ये लैंग्वेज ऑफ साइलेंस के बारे में मैंने पहली बार पढ़ा था जब मैंने वो किताब पढ़ी थी पॉलो कोएल्हो डिसूजा की, द अल्केमिस्ट, कि संसार में और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो ह्यूमन बींग्स को नहीं पता। Birds have a language, ants have a language, plants have a language, air has a language, sun has a language, everything has a language, my dear friend. तो अब हम लोग जब बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, लैंग्वेज बस उतनी होनी चाहिए इतनी सामने वाले को समझ में आ जाए। और हम तो हिंदी बड़ी अच्छी बोलते हैं, हिंदुस्तानी है। जब मैं बचपन में सबसे पहले रोया था और मैंने पहला शब्द मुंह से निकाला होगा, आई एम श्योर सबने निकाला होगा, किसी ने डैड, फादर, मदर, दादाजी या ऐसा कुछ नहीं निकाला होगा। माँ, दा, पा, हिंदी में नहीं, हमने हिंदी में बोला है। मैं तो सरदार हूँ, सिख रिलीजन है मेरा, मैंने भी हिंदी में बोला है।
मैंने भी 80 तुस्सी नहीं बोला. Are you getting this? हिंदुस्तानी हम, वी आर इंडियंस. I'm proud of being an Indian. तो मैं आपको एक ही चीज समझाना चाह रहा हूं, बेस बड़ा क्लियर है. बेस यही है कि आप अगर किसी भी लैंग्वेज में बोल रहे हैं जिससे सामने वाला आपकी बात समझ में आ रही है, वही लैंग्वेज ठीक है. और अगर आपकी उस लैंग्वेज में कुछ हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है, वो लैंग्वेज ठीक नहीं है. अगर आप वो लैंग्वेज कंफर्टेबली नहीं बोल पा रहे हैं, वो हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, वो लैंग्वेज ठीक नहीं है. ठीक है. अभी मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं आपका प्रॉब्लम क्या है. स और श और श और स का प्रॉब्लम है. ठीक है. देखो ध्यान से इधर देखना कैमरे की तरफ. ठीक है. ये मेरी टंग का ब्लेड है. स स स जैसे मैं श बोल रहा हूं, मेरा ब्लेड रोल हो रहा है. श शे शे शे. ये अब आपकी जो लैंग्वेज है जिसमें आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, उसमें आप स को श बोल रहे हो. शेर, शाबाश. ठीक है. आप शेर को शेर बोल रहे हो और स को श बोल रहे हो. ऐसा ही हो रहा है ना. आपने अपना ब्लेड जो है ना, यहां से इसको ठीक करना है. ब्लेड की मूवमेंट ठीक करनी है. ब्लेड की आप करो, बोलो कुछ स वाला वर्ड बोलो जिसमें श निकलता हो. मतलब सड़क, ये तो करेक्ट हुआ. शानदार. हाँ. अब शानदार. एक मिनट जरा मुंह खोलो. 1 मिनट खोलो. कोई आसपास तो नहीं बैठा ना. नहीं कोई नहीं है, मैं अकेला हाँ हूँ. बिल्कुल बिल्कुल, जॉ ओपन कर लो. अब हाँ बिल्कुल. अब शानदार बोलो. शानदार. शानदार में क्या हो रहा है? ये ब्लेड कहाँ जा रहा है? जेब का, जीभ का दांत में टच हो रहा है. है. हाँ. आपका शानदार जा रहा है. ये जबकि नीचे आना चाहिए. शानदार. आपका कैसे जा रहा है? आपके जा रहा है शानदार. शानदार. आहा, ये आ गई ना बात पकड़ में. प्रॉब्लम तब तक प्रॉब्लम होती है जब तक उसका सोल्यूशन नहीं होता. प्रॉब्लम तब तक प्रॉब्लम होती है जब तक वो प्रॉब्लम क्रिएट समझ नहीं आती. प्रॉब्लम पकड़ी गई आपकी. ठीक है. मुझे ये प्रैक्टिस करना है बेसिकली. आप बस ये प्रैक्टिस करना. आप प्रैक्टिस करने का मंत्र सिखा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनो, इधर कंसंट्रेट करो. ऐसा होता है हम लोग लैंग्वेज कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं. ध्यान से देखना क्या करने वाला हूं मैं अब. मैं स से श पे लैंड कर रहा हूं और मैं श से स पे लैंड कर रहा हूं. इससे मैं अपने ब्रेन को ये कन्वे कर रहा हूं. देखो ब्रेन, देखो सुनो मेरी बात. मैं तुम्हारा कहना मानता हूं ना, अब तुम मेरा कहना मानो. देखो मैं क्या कर रहा हूं. मैं श से स पे आ रहा हूं और स से श पे जा रहा हूं. यानी कि मैं दोनों का डिफरेंशिएशन माइंड में क्लियर कर रहा हूं. संदीप थोड़ा पानी पी लो और म्यूट करो. मैं दोनों का डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं माइंड में, स और श और श और स में. ठीक है ना. तो जब मैंने स और श स करो एक बारी. ठीक है. अब ऐसा है, इसको आपने हर रोज 5 बारी रिपीट करना है. यानी कि आप 5 के 10 सेट करो इसके. जैसे श ये एक हो गया. ऐसे 10 बारी करना है. 10 बारी करोगे ये आपका एक सेट बनेगा. 10 बारी करोगे एक सेट बनेगा. यानी कि 50 रेपिटेशंस, 50 रेप्स हो गए. ये आपने 50 रेप्स एवरीडे करने हैं फॉर द नेक्स्ट 7 डेज. कितने डेज? 7 डेज. बस 7 दिन के बाद मुझे रिपोर्ट करना आप. अगर आपको इसमें 20, 30, 40% फर्क ना आए तो मैं अपना काम बंद कर दूंगा. आ जाएगा मुझे 2-3 दिन में. और अगर 30-40% फर्क आ गया ना, आपका माइंड अपने आप आपको बोलेगा अरे धर्मेंद्र रुक यार 1 मिनट. श बोल, यहाँ पे श बोल. आप अपने आप श बोलोगे. ये ब्रेन कॉन्शियसनेस और ऑर्गन मूवमेंट का खेल है और लैंग्वेज डिटर्मिनेशन कॉन्शियसनेस का खेल है. समझ में आ गई बात? आ गई. तो सर 2 होते हैं, 3 होते हैं. एक स एक श भी तो होता है षटकोण वाला. उसका भी डिफरेंट है क्या प्रोनाउंसिएशन? वो उसका है क्षत्रिय. उस श से पहले क की आवाज आती है. हाँ. क्षत्रिय नहीं है. उसकी शुरुआत क से होती है, हल्का क. हाँ. क्षत्रिय, क्षत्रिय,
क्षत्रिय, हम उसको क्षत्रिय नहीं बोलते, क्षत्रिय। ठीक है, तो क पे हल्का सा टच है। ठीक है, ठीक है, मैं इसको करता हूँ, उसके बाद फिर ज और ज का नेक्स्ट वीक में मैं पूछूंगा। ठीक है, कुछ सोल्यूशन मिला? हाँ, मिल गया, वो हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट। काफी लोगों ने हाथ खड़े किए हुए थे, हम आ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ जी, हेलो आयुष। सर। हाँ जी, हाँ जी, अजंता। हेलो अजंता, सर। हेलो हेलो, कौन है सर आप? मुझे ना अभी तक सेटिस्फेक्शन हुई जो हाँ हाँ, रीना। अरे रीना, तुम हेल- क्या, इधर आओ, एक मिनट रुको। रीना चोपड़ा। रीना जी, ऐसा है, हाँ जी। सबसे पहले एक तो आपने, हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आपको आ रही है सर? मेरे को आवाज आ रही है। एक तो आप ना अपना मोबाइल को हेलो। पहले कहीं बिठाओ, मोबाइल को बैठाओ कहीं, और अपना ईयरफोन लगाओ कान में। हेलो। आपको आवाज आ रही है मेरी, रीना जी? सर आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है, बड़ी बिल्कुल क्लियर आ रही है। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपको आवाज नहीं आ रही लगता है। पहले अपना ईयरफोन्स लगाओ, कान विच ईयरफोन लाओ पहला तुसी। मैं आना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। Put the earphones in the ear first. Okay, I'll come back to you. Okay. All right, who's next? और कोई बात करना चाहेगा? Anybody? सर Amy, मीना कर्माकर। Meena, I'm coming to you. Amy, I hope you are clear with Hindi language. You're comfortable. And anybody who has joined from other country, No, sir, I actually don't understand Hindi. you're comfortable, right? You can understand. No, I can't understand actually. You can't understand Hindi. Oh my God. Okay. All right. Okay, fine. I'll try to speak more in English, and I'll try to be a Right. better English speaker rather than Hindi speaker. Okay. All But right. that's okay. I'm trying to understand your body language, so that's all right. Okay, moments ago, I tried to help that gentleman who was facing the problem of using the word sir to sure and sure to sir. What happens is when we use certain consonant voice words and voices on certain words, we tend to apply the knowledge patterns which were created since childhood. Now, in the villages of India, I'm sure you will agree that lot of teachers and mentors, due to their poor background in English language or their lack of knowledge, they do not convey the proper sound to the children, and that's when it gets all True. messed up. And instead of saying sure to a word, they start saying sir. So the consonant voice of the sound of the word changes, and that's where all the, you know, difficulty begins for the individual. And by the time he grows up, his pronunciation is messed up, his entire language is completely, you know, goes for a toss. Understand, yeah. Yeah, so that's what happens. Jasmeet is saying, please elaborate on voice stage and fillers. I'll come to you, Jasmeet. I think we should have one-on-one talk here first. Okay. Hi, Nelson. How are you? Dr. Nelson, good to see you. I've been watching you very, very active. Okay. Meena Karmakar, you were saying something. Go ahead, please. हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। Good evening. सर 3 वीडियो बनाया वैसे मैंने, मतलब इनिशियल 2 डेज तो आई वाज नॉट एबल टू बिकॉज सम डिवाइस इन फैमिली। अच्छा अच्छा। सो मैंने इसलिए आपको अलग से मैसेज डाला था पर्सनल विंडो पे, एंड आई नहीं, क्रिएटेड ओनली 3 विंडो कोई वीडियोस। बात नहीं। आपका आज वाला वीडियो बहुत बेटर बना है। एक तो ऐसा है, बॉडी का जो हमने अपना, ये जैसे आप मेरा फ्रेम स्क्रीन देख रहे हो ना, हाँ जी। ठीक है, ये हमारा हाफ चेस्ट एरिया है ये, ठीक है। ये ठीक है। हाफ चेस्ट एरिया तक आपने कम से कम रखना है, या फिर हमारा टॉर्सो, ये हमारा टॉर्सो है ये, ओके। ठीक है। यहाँ मेरा ओके। टमी है, ये टॉर्सो एरिया है। या तो आप टॉर्सो एरिया तक अपने वीडियो फ्रेम को रखिए, या चेस्ट एरिया तक रखिए, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये अगर आपका नहीं दिख रहा वीडियो के अंदर, तो क्रेडिबिलिटी क्रिएट नहीं हो पाएगी, ओके। ठीक है। बहुत ठीक सारे है। लोग ये दिक्कत में आ रहे थे, तो सबके लिए आई थिंक ये सोल्यूशन है एक, ठीक है। बाकी आप सर करते रहिए। ये वाला वीडियो शूटिंग बेटी ने किया था मेरे लिए। ठीक शी है, गुड। आई टेल हर कि भैया तो वीडियो पकड़ो, बोलते हैं हमें। और उसमें सर मेरे साथ एक चैलेंज है कि मैंने तीनों के तीनों वीडियो में कंटेंट कहीं नहीं लिखा, एक्सटेम्पोर बोल दीजिए,
उठाया और 10-12 वीडियो में उसको कोशिश करी बनाने की, बट द लास्ट वीडियो जो मैंने अभी फेस्टिवल पे बनाया, उसके बाद मुझे कुछ लाइन्स बाद में ध्यान आई जो शायद मैं डाल सकती थी, लाइक फॉर द आर्मी पर्सन्स, दोज़ आर on the borders and saving us, due to that we are actually celebrating the festivals. तो वो कुछ लाइन्स जो मुझे लगा कि बहुत पावरफुल हो सकती थी एंड स्टेटमेंट में, आई मिस दैट. सो Okay. अब मुझे लग रहा है कि शायद मैं कंटेंट लिख के अगर शायद वीडियो बनाऊंगी तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, नहीं क्योंकि वो आप 3 से मेरी लर्निंग है वो. हाँ ठीक है, गुड। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसा होता है हमारे ब्रेन में, जैसी कोई चीज़ आप डालोगे ना, ये बड़ा नॉटी है, ये बड़ा ही नॉटी है। ये क्या करेगा, थोड़ी देर बाद आपको बोलेगा, हे मीना, मीना ये भी बोल सकते हैं हम, मीना हाँ. मीना मीना ये वाला बोलना भूल गए, ये वाला, अरे ये वाला बोलो, ये वाला बोलो, ये इसका इसका ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। ये बहुत नॉटी है, ये बहुत तंग करेगा आपको बाद में। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, जब आप कंटेंट बनाने के लिए बैठते हो ना, अपने ब्रेन में क्वेश्चन शूट कर दो। अच्छा Okay. सुनो, आज मुझे कार्टून कैरेक्टर के ऊपर वीडियो बनाना है, मुझे 4-5 पॉइंट्स बताओ और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स बचपन से लेकर अब तक जो जो मैंने बनाए हैं, करे हैं, एक्सपीरियंस किए, मुझे याद करके बताओ। थैंक यू। ये आपको थोड़ी देर में बता देगा। आज मैं ट्राई करते हो. आपको अभी मेरा मैंने आधा ही लिखा है. आपको मेरी बात बड़ी हंसी मजाक वाली लग रही होगी ना। मैं आपको नहीं है सर, नहीं है। मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ, एक्चुअली में ये ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है। क्वेश्चनिंग टू योरसेल्फ. ये आपको बचपन से लेकर आपकी अभी तक की उम्र तक जितने भी कार्टून से रिलेटेड बातें होगी ना, सब याद दिला देगा धीरे धीरे, सब कुछ याद दिलाएगा। ठीक है सर. एक्चुअली हमारे ब्रेन का भी एक ब्रेन होता है और हमारे हार्ट का भी एक ब्रेन एक होता है। ब्रेन होता है. हाँ. और एक स्टडी आई है अभी जिसमें हमारे हर एक ऑर्गन का अपना ब्रेन है, ये भी स्टडी आ गई है। तो रह क्या गया फिर, सब जगह ही तो ब्रेन चल रहा है। हाँ अजंता, ठीक है मीना, ओके, ऑल द बेस्ट ठीक है सर. अजंता। थैंक यू. हाँ जी सर, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। इतना इतना वंडरफुल प्लेटफॉर्म है ना सर, मजा आ जाता है हर दिन क्या कहते हैं, एक नया टॉपिक, एक नया विचार के साथ उस टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है, उस टॉपिक में क्या बोलना है, मतलब कैसे कुछ कहानी उसमें इंक्लूड कर सकता है। दिस इज रियली अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ माय लाइफ सर। ऐसा मैंने कभी भी इतनी खुशी मैंने महसूस नहीं की है सर। चलो ऑल द बेस्ट। आज मैं आपको पहली बार हिंदी बोलते हुए सुन रहा हूँ, मुझे तो लगता है आप हिंदी बोलते ही नहीं हो। आपकी वीडियो जब भी मैंने देखी, अब इंग्लिश में ही देखी ना मैंने। हिंदी में था ना वो बचपन के दिन। अच्छा, यस यस यस। बचपन का दिन और भी था वो, और एक भी वीडियो था। आज का भी वीडियो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिला के बनाया है। I'll see to it. I'll see to it. In fact, you are the first person in the entire group who posts her video early morning. I think you post every day around 5 or 6, if I'm not wrong. हाँ जी सर, सुबह 1 बजे से ही नींद खुल जाता है। उसके बाद जो टॉपिक में बैठती हूँ, फिर वो डायरेक्ट 5 बजे वो मतलब पोस्ट करके ही फिर वो निकलती हूँ वहां से दूसरा काम करने के I'm लिए। sure your husband does not complains. नो नो, उनको भी आदत हो गया है। चलो ठीक है, गुड गुड, ऑल द बेस्ट जनता। ओके, who's next? थैंक यू सर। Yeah, Kenny जी प्लीज। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਕਦੋਂ ਭਿਜਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣੇ ਭਿਜਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮਿਠਾਈ। Okay, great great. First of all, I would really like to thank you for this amazing journey. And I make other videos also on Gurbani. ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਥੀ, I mean you are making your hands gestures. I hardly used to use my hands, so now I've started hand gestures as well. This is the best thing which I have learned. क्या बात है, awesome awesome. I'm really happy to hear that. Yeah, वो मैं मतलब deliberately मैं कभी हाथ से इस तरह I never used to, कभी थोड़ा बहुत I used to, but this is the biggest transformation in me, you know, and now I use my hands for speaking. And ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ feedback ਦਿੱਤਾ ਸੀ, use hand gestures, and I said, oh yes, this is something which I had not been doing. And other things also, like I have improved on my voice modulation
ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, I used to just speak like, you know, now intentionally I am getting present to the things which I had not been doing. Okay. I mean, this is a total path of improvement. And hats off Excellent. to you and Kulvinder ji. Thank Excellent. you I'm so proud much. of you. I'm proud of you. In fact, you have raised a very, very important topic. I wanted to share the screen and I wanted to share 5, 6 important hand gestures. I hope all of you can see the screen. Everybody? Yeah. Yes? Okay. Mhm. The number one hand gesture which you can see here on your screen is give hand gesture, right? This is the first hand gesture, give hand gesture. Now, this is the second hand gesture. One second. Yeah, this is the show gesture. ये आपका Yeah. show gesture है. Yes. When you are explaining something and when you are trying to create something in the minds of your audience, you can use this quite often. Then chopping hand gesture, this is half chop when you're saying something important. And when you're saying something really significant, then you can use full chop. So I wanted to tell all of you, full chop. I wanted to tell all of you half chop. So, number one, follow inspiration. Number two, read inspiration. Number three, write inspiration. So, this is called showing number hand gestures. या आप में से कई लोग करते हैं. Most of you do. Steeple method. Steeple method is like this. Steeple method is when your body is under full control, resonance, and you are on top of your content, authenticity, endurance, and you know what you're talking about. It is conveying to the audience that you know what you are talking about clearly. Most of the global speakers use this gesture known as steeple method. Then interlaced fingers thumbs up, which works like this. Yeah, like this. So these are some of the gestures which you can use in your public speaking speeches as well, which will help you further to modify and make it more authentic for the audience. Okay. Nishant, I'll come to you. How do you emote? I'll come to you today. Okay. Who want to speak next? Next. Yeah, Dr. Sananda. Thank you so much, sir, for this wonderful platform. Most As a welcome. doctor, like मुझे CMEs present करना होता है, seminar and बहुत videos बनाने होते हैं. लेकिन एक proper मुझे कभी feedback नहीं मिला कि how is it going. सब लोग अच्छा है, बहुत अच्छा है बोलते हैं. But जब से मैं आपके guidance में आई हूँ, I'm getting to know what I lack. तो थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड आप बार बार मुझे वॉइस अपना थोड़ा वीआर ठीक करने के लिए बोल रहे हैं. आई विल वर्क ऑन इट. हाँ, तो देखो ऐसा है, मैं वीआर के ऊपर थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ और आप ना थोड़ा खुल के बोलो. एक मिनट आप थोड़ा खुल के हंसना. जैसे मैं हंस रहा हूँ मेरे को कॉपी करो, मेरे को कॉपी करना, ठीक है? ओके, जस्ट थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, एकदम बिल्कुल रिलैक्स बैठे हो ना. कोई है तो नहीं कमरे में? कोई डिस्टर्ब तो नहीं होगा? नो. कोई सो तो नहीं रहा ना? ठीक है, ओके. अब आप मेरी तरह बोलना, ठीक है? मुझे मिमिक करना आप. देखो जरा. Say the lines also. देखो जरा. ओके, रिलैक्स. ओके, रिलैक्स. आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे वॉइस में. देखना जरा. देखना जरा. ऑसम, ऑसम. आप थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड. ओह देखो जरा इसको, देखो देखो. डू दैट. माय गॉड, देखो जरा इसको. ओके, गॉट इट. अभी क्या हो रहा है कि जो हमारा फर्स्ट वाला वर्जन है ना, सनंदा, आप फर्स्ट वाले वर्जन से भी नीचे चल रहे हो. ठीक है. हमारा वॉइस रेंज में 3 रेंजेस होते हैं: हायर रेंज, मीडियम रेंज और लो रेंज. आप लो रेंज से भी थोड़ा सा नीचे चलते हो जब आप बोलते हो, तो आपका वॉइस रेंज लो आता है. इसको हाई कैसे करना है वो मैंने आपको अभी एग्जांपल के थ्रू बताया. हाई, मीडियम, लो. ठीक है. हम जब पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो पब्लिक स्पीकिंग में हाई का अलग रिक्वायरमेंट होता है, मीडियम का अलग रिक्वायरमेंट होता है, लो का अलग रिक्वायरमेंट होता है. अब आप मुझे ध्यान से सुनो. अगर मैं आपको आज ये बताऊं कि आपकी वॉइस रेंज
आपके अपने हाथ में है। तो वो आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आपको अच्छा लगेगा, क्या आपको बुरा लगेगा, या फिर आपको बहुत शानदार लगेगा? अच्छा बुरा शानदार में मैंने वॉइस रेंज मिक्स कर दिया, ठीक है। तो हमारा वॉइस रेंज जैसे ही हमारे वर्ड्स के साथ कनेक्ट होता है, ये इसमें एक एनर्जी, ऊर्जा भर देता है, एक अलग तरीके की एक ऐसी पावर आ जाती है इसमें, शब्दों में जान आ जाती है। ऐसा लगता है कि शब्द बोल रहे हैं, अरे तुम मेरे से बोल रहे हो क्या? कई बार ऐसा होता है ना, सर आपके शब्द ऐसा लग रहा था आज मेरे से बोल रहे थे। वो हम बोलते हैं ना कई बार ऐसे, यू वर टॉकिंग एज इफ यू वर टॉकिंग टू मी, ओ माय गॉड, होता है ना। तो हम उस शब्दों में ऐसी जान डाल देते हैं जब हम वॉइस रेंज यूज करते हैं, उसमें ऐसी पावर क्रिएट हो जाती है, वो ऐसा लगता है कि वो वर्ड्स हमारे से कोई बात कर रहे हैं। मतलब वर्ड्स वर्ड्स की अपनी आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। समझ रहे हो आप? इतनी पावर है वॉइस रेंज में। Yes, sir. अब डिफरेंस समझ में आ गया? Yes, sir. I'll definitely work on it. ऑसम ऑसम, ऑल द बेस्ट। Thank you. ओके ग्रेट, हुज नेक्स्ट? सर मेरा फीडबैक, नहीं अजंता, आप फीडबैक इंडिविजुअली नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। अभी अभी हम लोग वन बाय वन आ रहे हैं सबके पास। ओके फीडबैक ओके, आपको जो पोस्ट पे मिल रहा है वही है। आप हाँ जी अच्छा हाँ कर जी रहे, सर, आप अच्छा कर रहे हैं। कीप ऑन डूइंग इट। थैंक यू सर। ऑल राइट, एनीबडी हु वांट्स टू स्पीक समथिंग, शैल आई प्रोसीड विद? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हेलो। निशांत। गुड इवनिंग सर। मेरा एक्चुअली क्या प्रॉब्लम क्या होता है कि जब कैमरे के सामने मैं रहता हूँ ना, तो आई थिंक वॉइस मॉड्यूलेशन इज बिकॉज आई एम कैमरा कॉन्शियस, मैं कॉन्शियस हो जा रहा हूँ। तो ये एक मेरा सर ऑब्जर्वेशन था, क्योंकि अभी अगर आप मुझे देखोगे सर कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ, वॉइस मॉड्यूलेशंस तो हैं। तो ये एक पार्ट था, और दूसरा पार्ट था कि जब हम इमोट करते हैं, तो जैसे अपनी चैट भी हुई थी, इस पे आपको मैंने एक रीजन बताया हुआ था। तो अभी इसमें से अगर मुझे आगे बढ़ना है सर, तो बेसिकली एक जनरल आइडिया अगर आप दे दो तो अच्छी बात है सर। ओके, आप अपना ये जो माइक्रोफोन है मुंह से थोड़ा सा नीचे कर, इसको छोड़ दीजिए। अब आप बोलिए कुछ। ओके, गुड इवनिंग सर। हाँ बिल्कुल ठीक आ रही है आपकी आवाज। आपने अपना सबसे पहले ये ईयरफोन जो लिया हुआ है आपने, इसमें क्लिप वाला ईयरफोन आता है जहाँ पे माइक हमारा शर्ट पे लग जाता है। ओके आप उसको यूज करेंगे, ठीक है। ओके हम ओके वर्चुअल वर्चुअल स्पीकिंग इज नाउ न्यू नॉर्मल ड्यू टू कोविड-19, यस सर, इट इज right? So digital communication has come up with something like a very new skill which we all need to adapt across all the profiles, sectors, industries, and businesses. So you need to understand, if you are coming on the screen, I am using a condensed microphone. Somebody is using the proper, the wireless microphone. Somebody is using the lapel mic. Somebody is using the hand mic. You need to just figure it out, what works best for you, what gives you the most highest comfort, and then implement it. अगर आपके पास ईयरफोन है, ईयरफोन का प्लेसमेंट चेक कीजिए, ठीक है। आपको बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ओके ठीक है। डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको रिलैक्स कीजिए, उसको कहीं क्लिप कीजिए पहले, उसको टेस्ट कीजिए पहले कि मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो कैसी आवाज जा रही है। किसी को बुला लीजिए घर से, वाइफ को बुला लीजिए, बच्चे को बुला लीजिए, पेरेंट्स को बुला लीजिए, एक जूम पे बुला के टेस्टिंग कर लीजिए। टेस्टिंग करके आवाज चेक हो जाएगी। वो टेस्टिंग करने के बाद जहां पर उसकी प्लेसमेंट होगी माइक की, उसी प्लेसमेंट पे ही सबसे बात करनी है स्क्रीन के सामने। ओके। और अगर इंटीग्रेटेड माइक है सर, जैसे लैपटॉप से मैं कर रहा हूँ अभी, तो लैपटॉप इज हैविंग इंटीग्रेटेड माइक सर, तो उसमें क्या डिफरेंस हो सकते हैं सर? कॉमन सेंस है, आप डिस्टेंस देखो ना। अगर आप 2 फीट के डिस्टेंस पे हो तो आवाज ठीक जाएगी। थोड़ा सा दूर बैठोगे, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करते हो, ऑनलाइन न्यूज स्पीकिंग कर रहे हो, पीछे आपने जैसे ही पीछे अपना बॉडी को मूव करा, आप माइक से दूर चले गए। माइक से दूर चले गए तो आवाज भी दूर चली गई। आवाज दूर चलेगी तो आवाज की जो इनपुट है वो भी तो लो हो गई ना। तो इनपुट लो हो गई तो जो आपका व्यूअर है उसको आवाज कम सुनाई दे रही है। हमने अपना फायदा नहीं देखना बोलते हुए, हमने व्यूअर को सुनाना है। व्यूअर हमारा किंग है, कस्टमर है। व्यूअर इज एवरीथिंग। अभी जो वीडियोस आप लोग बना रहे हैं, द वीडियोस व्हिच यू ऑल आर मेकिंग, यू आर मेकिंग इट फॉर whom? योर ऑडियंस हु इज वाचिंग योर वीडियो, फॉर मी हु इज इवैल्यूएटिंग योर वीडियो। ओके। सो यू नीड टू बी माइंडफुल। आप कभी लाइफ में डिप्रेशन में गए हो निशांत? हाँ सर, 3 बार जा चुका हूँ, 3 बार निकल चुका हूँ सर। अभी डिप्रेशन में हो?
नहीं सर, नहीं अभी नहीं है। तो इतना उदास क्यों रहते हो फिर? नहीं, उदास का ये बात नहीं है, क्योंकि ऐसे मुझे हंसते क्यों नहीं पहले वीडियो में? हंसो जोर से एक बारी, जोर से हंसो। सर नहीं हो पाएगा सर, ये थोड़ा बोलते ना मेरा पहले से ब्लॉक रह चुका है, जो ओवरकम हो ही नहीं रहा है सर। आप बहुत जन ने कहा कि मैं अगर खुल के बोलता हूँ या हंसता हूँ तो काफी अच्छा लगता है सर। जैसे आपने भी एक निगेटिविटी के वीडियो पे सर ये बताया था, आपने एक वॉइस प्रेस दिया था मुझे ग्रुप में। लेकिन ये बात बोलते ना, मैं जितना भी ट्राई करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं आर्टिफिशियल हो जाता हूँ सर। तो ये एक रीजन है सर कि ज्यादा बोलते ना खुल के हंस नहीं पाता हूँ, या खुल के मैं हंसता नहीं हूँ सर, राधा देन हंस नहीं पाता हूँ सर। तो ऐसी कौन सी बात है आप शेयर करना चाहोगे हम सबके लिए, या आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई नहीं, बात नहीं? मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन क्या होता है ना सर कि जब आप के जो फॉर्मेटिव इयर्स होते हैं, जैसे करंटली आई एम 38 राइट नाउ, तो जो अपने यंग फॉर्मेटिव इयर्स होते हैं, तो वहां पे जो मेरे करीबी थे वो ही मुझे बोलते हैं ना कि 10 जन के सामने चिल्ला देना या 10 जन के सामने मार देना, तो फिर ये ब्लॉक हो गया कि मैंने खुद को विड्रॉ कर लिया था। यानी बोलते हैं ना किसी से कुछ बात करना नहीं, इमोट करना नहीं, जितना बोलते हैं जितना पूछते हैं उतना बताना, उससे ज्यादा बोलना नहीं या टू द पॉइंट रहना। तो इस सारे में क्या हो गया कि जो एक इमोशन जो हम बोलते हैं ना बच्चे को खुल के हंसाना या बोलते हैं ना या खुल के बात करो, तो ये चीजें सर हुई नहीं मेरे साथ। तो अभी भी आप जो ये सर आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं पे सर मुझे सिखाने वाले मिले हैं कि जो आज मैं इतना बोल पा रहा हूँ सर। तो ये एक बोलते ना बड़े से बड़ा एक मेंटल ब्लॉक होता है, जो मैं हमेशा याद रखता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ। तो मैं हमेशा याद रखता हूँ कि अगर मुझे किसी को गलती बतानी है तो उसे इंडिविजुअली बताओ अगर सीरियस बात है, नहीं तो उसे स्टोरी फॉर्म में या मॉरल्स में बताओ कि बॉस ये यहाँ पे आप बोलते ना क्या यहाँ पे पढ़ाते आप हो आप? गलत जा रहे हो। आप टीचर हो, क्या पढ़ाते हो आप? हाँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ सर, इंग्लिश और एसएसटी पढ़ाता हूँ सर, सीबीएसई के लिए। सीनियर क्लासेस को, सीनियर सेकेंडरी? हाँ सर, लाइक फ्रॉम यू कैन टेल फ्रॉम 7 till 12th, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड प्रोफेशनल्स को भी सर, जो एक बेसिक लैंग्वेज स्किल होती है ना सर, वो देता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, मैं तो आपको एक ही चीज बोलूंगा, बस वापस आ जाओ। यस सर, आई गॉट इट सर। बदल डालो वक्त को, या वक्त बदलना सीखो। बदल डालो वक्त को, या वक्त बदलना सीखो। मुश्किलों और हालातों से मत घबराओ, हर हाल में लड़ना सीखो। थैंक यू सर। आगे बढ़ो आप। थैंक यू। जो आपका ब्लॉकेज है ना, वो आपकी अपनी सोच की वजह से ही है। आगे बढ़ो। ओके सर। वैसे शहरी जी, मैं जरूर कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा इसमें कुछ। हाँ प्लीज बोलो ना। मुझे ये चीज मतलब उनकी बात सुन के मैं काफी ज्यादा उस चीज को रिलेट करा कि व्हाट ही फील्स, व्हाट ही हैज गॉन थ्रू थ्रू ऑल दिस मेंटल थिंग। सो सर एक चीज ही बोलूंगा जी कि जैसे भी होना सर वैसे ही रहो, ये लोगों की परवाह मत करो। ठीक है, जो टाइम आपका निकल गया वो निकल गया, बट आई फील कि हमेशा एक अपने आप में खुद की पर्सनालिटी में जीना वो बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि दुनिया का क्या है, दुनिया तो बहुत बोलने वाले बैठे हुए हैं। अपने आप में सर खुश रहिए, अपना खुल के हंसिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू। चलो, आपका नाम बता दीजिए ना सर। सतनाम सिंह। थैंक यू सतनाम जी। ऐसे बड़े अच्छे अच्छे लोग ग्रुप में और हैं, आप चैट वैट करा करो, बात बात किया करो। किसी ने रोका थोड़े ना, हाथ थोड़े ना पकड़ा किसी ने आपका। और क्या, थोड़ा सा अपने आप को खोलो, आप खुल के आगे आओ। जी सर। ठीक है निशांत, खुल के आगे आओ। ऑल द बेस्ट। Okay, Thank you. great. Aina, you want to say something? I'm coming to Nupur, Mukesh, Vipul, and Kenny also. I think you raised your hands up. Yeah, Aina. I think you're on mute, Aina. How has been your experience? Mute पे हो आप Aina. I think आप mute पर हो. Yeah. Yeah. Now you're on mute. Now I think I'm audible. Yeah. Yes. Thank you so very, author Sharish sir. Just because of the reason I was that scared, I was that shy, I was not able to upload my pictures on the social media. और अब मैं अपनी videos भी WhatsApp पे groups पे भेज रही हूँ. So it's a big transformation for me.
आई डोंट नो कैसे इतने सालों में इतना कॉन्फिडेंस लो हो गया कि अपनी पिक्चर्स भी भेजना या अपनी पिक्चर्स शेयर करना अच्छा नहीं लगता था। और अब अपनी वीडियो गलतियां भी दिखती हैं जहां मैं हूँ, बट स्टिल सर बहुत मजा आ रहा है, इन दिस लर्निंग प्रोसेस, वेयर यू आर गेटिंग evaluation, वेयर मीटिंग विद a lot of new people and learning from them. So it's an amazing journey, I think. फैंटास्टिक आयना, गुड टू हियर दैट। और आपके वीडियोस अच्छे बन के आ रहे हैं। स्क्रीन, एक मोबाइल को जब आप बनाते हो ना, व्हेन यू Hmm. क्रिएट द वीडियोस, मेक श्योर दैट योर मोबाइल इज प्लेस्ड समवेयर and then you are creating the videos. Don't run with the camera, don't walk with the camera. That is not professional. And secondly, you are disturbing the eyes of the viewer. Hmm. Don't disturb the eye of the viewer. Give Sir, comfort, give comfort to the viewer. They hmm. should watch you, they should stick to your message, they should stick to your face, your body when you are giving and delivering a talk. True. ठीक है, कहीं पे अपनी जगह बनाओ मोबाइल की। एंड दिस इज गोइंग टू स्टे नाउ आईना फॉर नेक्स्ट 30, 40, 50, maybe 100 years or maybe more than that. Digital speaking will not evade away now from the world. It's going to be here for a very long time. It is already there in Western countries. Now in India, people have realized this. So I always say what was supposed to happen in next 10 years is has just now happened in 3, 4 months due to this epidemic. I can't hear because of the poor network. Okay, no problem. We'll come to you. I guess I just said it. People have listened to it. I'll come back to you. Okay, great. Quickly, I would like to come to Vipul Gupta. You So, want to? Yeah, so, Aina. Yeah. so, Hello. विपुल आप एक मिनट रुको, ये आयना आप बोलिए प्लीज। yes, sir. So I wanted to share one more thing, that the problem I'm facing is with the content thing, because creativity भी kill almost हो चुकी थी, तो जिसको हम दोबारा जगाने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक तो इतनी जल्दी जल्दी कंटेंट, ज्यादा कंटेंट बनता नहीं है, और अगर थोड़ी सी भी स्पीड से बोलते हैं तो वो विद इन 1 मिनट फिनिश हो जाता है। तो इसलिए मुझे स्लो स्लो बोलना पड़ता है, धीरे धीरे बोलना पड़ता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। सो दैट्स गुड। तो आप एक काम किया करो, देखो ऐसा है, इसके 2-3 सॉल्यूशंस देता हूं मैं। सबसे पहले तो अगर आपको किसी टॉपिक पे बोलना है, try to speak with 2, 3, 4 friends who are near and dear to you and ask them about their views, or intentionally take this topic. Hey, do you watch cartoon? Yesterday I saw my niece watching that. It's so funny na, why these kids watch cartoon. It really fascinates me why they spend so much of time. They need Maggie also, they need coffee also, they need chips also. Just stick to the television for one hour. I don't know anything about cartoon. And he's going to say something. Listen to that. That's one way of creating your content. You will get some nugget. One. And when you will speak to 3 to 4 people, you will definitely get some nugget. Okay. Now, what is your learning in this? Why will you do this? good idea, sir. I'll try to follow. Yeah. Why will you do this also? It should make sense because our brain wants sensible, logical thing. It's just not an idea in a session. I'm not giving you an idea in a session. I'm giving you a logic. You will apply this because you will tell your brain, hey, listen, you don't understand anything and you don't know about cartoon, and I'm giving you certain inputs. So just try to keep that in mind and let's learn from people. So open the learning curve where you can absorb certain content from people. Yeah. Second, when there is a subject, there's always a keyword. Whatever subjects we are giving to you, these are the keywords. Now, when I say cartoon, there are many Indian characters of cartoon. There is Pinku, Pinky, Billu, Super Commando Dhruv, He-Man, then Poggy Man, then Gayab Aya, then Disney Tales, and there are so many cartoon characters. Indian cartoon industry is full of cartoons. So just try to find out one cartoon, study about it, and resonate with the thought process of that cartoon, because
any character which has been created by that series of cartoon director or creative specialist, they have tried to give a message through cartoon. Whatever cartoon you will watch, there is a story in it. So try to adapt that character of the cartoon and just try to create a similarity, that which similarity you have which matches the character of the cartoon, and that's where you can create the content easily. I hope this helps. This is one area which probably will help you more. And further, thirdly, I want you to read more, and that's the mantra I'm going to share today. How many of you read books over here? Yeah, see, very few hands. I'm going to yeah, okay. I've seen now people raising hands. I want you all to start reading books in this journey of 21 days of public speaking course. Now the question is, from where you will get quality books. I will be sharing it in the group. I have more than 5,000 ebooks with me, and two ebooks. First ebook will be from Robin Sharma, and Okay. second will be from Jack Canfield, The Success Principles. I'm Okay. going to share these two ebooks with all of you. Start reading books. The books will increase your horizon, your capacity building, your mind, your engagement, your content clarity, your co-creation of the content, your creativity skills. I'm going to do that. Okay. I hope this helps, Aina. Yes, yes, sir. Very much. Thank you Okay. so And wherever you get stuck, don't be afraid to drop a message in the group. Don't feel that यार मैं ये पूछूंगी तो अजीब सा लगेगा ना, वैसे मैं कितनी that's what. इंटेलिजेंट हूँ, है ना? You can ask on the group. I think nobody is intelligent, including me. We all are just trying to explore. We all are progress in the making. Understand this. I'm saying a big thing right now. Yes, sir. Seriously. All the best. Yeah, Dr. Nelson, I'll come to you quickly. Yes, sir. Sir, I wanted to ask, first of all, let me thank you and Public Speaking University. It's a great pleasure to engage in this exercise. It has made me develop my speaking skills, public speaking skills a lot. I never used to speak in public properly, except for presenting my contents. PowerPoint is there. I used to read from the PowerPoints like that. First of all, sir, I would like to ask about this voice modulation, how I have to practice. Then my expression is always, it's a difficult part. When I start speaking, I forget that consciously I start in the beginning that I have to make those facial expressions and then emote. But as I go on, I forget. And towards the end, I say, okay, I need to redo it again. But as I make it again and again, I make more mistakes. So finally, I end up sending the first or second videos. And one thing is like you asked me about my fingers in the beginning. I was not sure whether it is a right thing or not. It's to be used. Yeah, finger. Yeah. No, it's not to be done. Okay. And eyes diverting away from the camera. My eyes were looking here and there. You committed to somebody. So I wanted to know more on that, how it is to be done. Okay, cool. About the content also, actually my mother tongue is Manipuri. I'm not able to speak Hindi in public speaking. I mean, not in a proper Hindi. Even English, I have some blocks in between. Sometimes when I converse, I try to find the words, although I prepare in my script, but I tend to forget at that time, and then I make up some other words. So how to deal with that? Fair enough. You understand Hindi, by the way, what I've been talking? I can understand. I can speak language. Okay. I can converse. I picked up Okay. after class 11th speaking Hindi. Mm-hmm. Okay, fair enough. So I'll start with the voice modulation part. So voice modulation has four components. The first is stressing. When we stress on a particular word, we want the audience to understand that word and the message in the sentence or the phrase. For example, if you're saying that I want you to understand that
Psychology is not everyone's cup of tea. So if you notice in this sentence which I used, I pushed on the word psychology because I wanted people to have the retention of this word, or I want people to have this word understand carefully. So I stressed on this word. So stressing is one component. The second is pauses. Whenever you are narrating sentences in any language, English, Hindi, Manipuri, in your case, take pauses. There are three types of pauses. I think somebody asked for pauses, so here's the answer. There are three types of pauses. The first is long term pause, up to 5 seconds. The second is short term pause, 1 to 3 seconds. And then the second is medium pause. The third is short term pause, which is zero point 0.4 to zero point 0.8 seconds. Now, we usually read any comprehension or we do any type of reading, we use short term pauses more. However, in public speaking, to strategize the message, to create the effectiveness in the message, many public speakers use medium and long term pauses like this. Okay, so pauses is the second component. The third component is spicing up the voice, and I call this as intonation. And intonation is, who the hell are you? This is lower intonation. Who the hell are you? This is higher intonation. Now, this is a part of spicing up the words. And the best way of learning the intonation is you can watch some Bollywood and Hollywood movie dialogues, right? Remember that Amitabh Bachchan dialogue? Are you fond of Bollywood movies? Yeah, sir. Yeah, remember that Amitabh Bachchan movie dialogue? Yeah, I remember one dialogue. ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं. Yeah, remember that dialogue? Yes, It's sir. still it's still kind of just keeps in mind the way he spoke. मेरा नाम शेर खान है. The way they deliver the topic, or the way they deliver their phrases, their dialogues, is something where they apply intonation. So spicing up your sentence, spicing up your words is something which comes under the intonation. And then fourth is, what if I tell you that English language is such a simple language where you can understand each and everything which I'm talking right now? Probably this is very, very fast. And if I will just talk to you like this, which is really kind of slow, you feel like, why did I even join this session? It's better to sleep on Sunday and have some cool time with the family. Why this guy is talking like this? So neither too fast or neither too slow is acceptable to brain. The brain loves to understand and hear moderate rate of speech. So your rate of speech is the fourth component in your voice modulation. Let's have a quick repetition. The first is, Stretching. the second is Second is pauses. pauses, the third is Third is spicing. spicing up, and the fourth is your rate of speech. If you can inculcate these four critical elements as a part of voice modulation, you'll gradually see that your speaking is going to the next level. And this will come with a lot of practice. I'll give you an example. If you can start reading every day for 5 minutes, speak on a higher tone, then speak on a medium tone, then speak on a lower tone. And if you do that using these four components for 1 week or 10 days minimum, you will inculcate a habit. And then that habit will form and create something as a part of your voice. And gradually you will adopt voice modulation. Okay. So this is about voice modulation. Hope this helps. Yeah. Yeah. What was your other question? You answered the eye and the finger, my eye movements here and there. Yeah, you see, this is a very, I would say, it's a very risky gesture. Who the hell are you? I'm not talking to you. If you will talk like this to somebody, it's like
complete arrogance. And even if you're saying, I'm such a sweet man, do you understand that? Now I'm talking very sweetly, but just by my finger on the camera, which is coming to you, you feel like, what kind of sweetness is that, Mr. Sherry? That's not, that ain't sweetness. That is like arrogance. You're like Miti Churi. So when you will use your body language, especially your gestures, you need to be mindful where your gestures are going and what kind of communication you are doing. You see, non-verbal is a part of communication. Dr. Albert Mehrabian has created a communication model theory which says 55% is the body language, 38% is the voice, and only 7% is the content. If I go by this theory, which is worldwide accepted by all the global communicators, you will see that 55% is body language. So, body language is very important. Yes? Hope Yes, this sir. helps, Dr. Nelson. Yes, sir. Yes, sir. All right, awesome. Practicing expression, sir. Yeah, expression practicing is very simple. Pick up your mobile phone, start the video camera. Did you pick up your mobile phone? Yes, sir. Okay. Click on the recording button. Recording. Recording is on. My recording is on here. रिकॉर्डिंग इज ऑन. अपनी मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करो ना आप. ओके. मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करना है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है. कैमरा. अच्छा, ओके. जस्ट अ मिनट. अरे मोबाइल का कूद रहा हूँ. मोबाइल कहाँ है आपका? सर मोबाइल इज इन माय हैंड ओनली. मोबाइल से लॉगिन किया आपने. चलो आप अपना इसको छोड़ दो, स्क्रीन ऑन करो अपना. So post session, what you need to do is, when you will start recording a video, start creating expressions like this. How you smile, how do you feel when you're sad, how do you feel when you're furious, how do you feel when you're angry, how do you feel when you're too sweet. So when you will record all these 6-7 gestures in front of the video camera, just watch it yourself and see where it is fitting into the requirements of public speaking. As in, if you are supposed to express sweetly, too sweetly, can you do that? If you are supposed to convey angerness, can you do that? And try to create that alignment between that gesture. And you will find gradually your expressions are coming to you naturally when you're doing public speaking. It's all about connecting and aligning your gestures, or I would say your facial expressions and emotions. I think in our group, Sneha, are you here? Sneha. Sneha is very good in creating feelings and emotions. Payal is very good. पायल के वीडियो देखो आप. कैनी गोगिया जी के वीडियो देखो आप. इनके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे आ रहे हैं. मधुरा पहचान से इसके वीडियो देखो. एमी, वॉच वीडियोस ऑफ एमी, शी क्रिएट्स गुड एक्सप्रेशंस. जितेंद्र मिश्रा, यू वॉच हिज वीडियोस. सो आई एम पर्पसली जसमीत कौर वीडियो देखो, आयना के वीडियोस देखो. सो दीज पीपल हैव दिस एबिलिटी. विपुल के वीडियोस भी देखो. So you will find these people are actually using their gestures and their emotions and facial expressions to their epitome of the skill set. So you will learn from there. I think you've already started doing that. You're watching some videos. Yeah, deliberately I'm trying to do that, so I'm picking it. Okay, I gave you some more time because I wanted to answer certain queries through you. So I have spoken on voice modulation, I've spoken on facial expressions. I hope all of you got a gist of it. Was it helpful for all of you? Yes. Yes, sir. Awesome. Yes, Okay. sir. Yes, All sir. right. So Yes, sir. I'll Yes, come sir. to. Yes, sir. Awesome. I'll come to Amy. Dr. Amy, you have raised the gestures. We'll take one or two more queries and then we'll wrap up the session. Dr. Amy, you wanted to add on something? How was your experience so far?
Hi everyone. Hi sir. Yeah, the experience was just amazing. I just love doing this. Every day I'm looking forward for the topic. There's little things that I need to ask you because there was one of my recording that I was trying to bring in the content of Bhagavad Gita. So when I was actually saying that, I tried to memorize that for many times so that I would say it right, you know. So I just want to ask you, is it okay if at the time that we want to say something, can we like refer to our note so that we don't go wrong? Would that be okay? Yeah, it will be okay, no problem. You see, there are two, three perspectives I want to share. The first perspective is that Mm-hmm. when you are doing a change in language, because Bhagavad Gita, Srimad Bhagavad Gita, the honorable Gita Granth is all written mostly in the Sanskrit language, and most of us are Yeah. not. Most of us are not actually habitual of speaking Sanskrit language in a routine. We are either equipped with our local language or native language, Yeah. so the mental patterns are not familiar. The moment you will say yada yada dharmasya, if certain patterns are created, it will give you great fluency. But the moment patterns are not there, and you will start fumbling, Yeah. and Yeah. that's where you get, oh, what's happening? Let's have another retake, and that's where you feel like, I'll tell Sherry sir, let me write it over here. I'll just see and read and speak. I know. Well, that's fine. That's completely okay. You can keep that as a form of your note, or you can Okay. smartly express it. There are ways of expressing it. You see, if you are in a global keynote, if you are doing addressing an international audience, there you are applying the Gita shlokas, and you feel like, I cannot memorize it. I need to say it. How will I do it? In that scenario, you can use the dais, keep the paper, and read it out, and then go in front of the audience and then start narrating about it and connect it to the context of your talk. This is completely okay. This is sensible. But when it comes to making the videos, so videos is something which is a quick bite. Now, the moment you will Mm-hmm. divert your attention to some material, immediately there is a risk of losing that momentum in the video format. So I am highlighting the importance of format also whenever you are referring to the notes. Yeah. If you are in a Yeah. formal gathering, if you're in a formal keynote, absolutely fine. You can very well use it. That's fine. In fact, most of the public Mm-hmm. speakers, you talk about John Martini, you talk about Robert Kiyosaki, Les Brown, you talk about the likes of Vishen Lakhiani, Tony Robbins, uh, all these people, you name all these international influencers, they use these cue cards. John Maxwell, these people use cue cards. So when they use cue cards, T. Harvaker, they use cue cards, they refer to the central idea, and then they start explaining it with their experiences. That's where I feel that rhetorical devices are important. You need to be on top of your metaphors, your analogies, your examples, illustrations, anecdotes, small stories. You have to be on top of it. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Awesome. Yeah, Vipul, I'll come to you. I hope that answers, Sammy. Yes, thank you so much, sir. Very nice. Thank you. Cool. You're welcome. Yeah, Vipul, you want to say Yeah, hello, something? sir. Hi. Hi. Yeah, Vipul, go ahead. Actually, I can't hear you, sir. Vipul, go ahead with your question. Vipul, go ahead. सर Okay, I think अगर मैं यहाँ से अनम्यूट दी हूँ तो आपकी वॉइस में आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम Vipul, आपकी तो आवाज मैं आ रही है, आप बोलिए. एक्चुअली मैं नहीं आप तक मेरी आवाज आ रही है जो ब्रेक होके आ रही है जब भी अनम्यूट कर रही हूँ तो मैं अपने करके अनम्यूट करके आपका आंसर सुन लेती हूँ तो एक्चुअली क्या है सर एक तो 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही तो उसके लिए थोड़ा सा ऑफिस में काम ज्यादा था दूसरा सर जितनी भी मेरी वीडियोस बन रही बिना प्रिपरेशन शेयर नहीं कर पा रही उसमें क्या जो भी थोड़ा बहुत मेरा
काम करते करते मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है, में रखते हुए कैमरे के आगे मैं जो अपनी स्पीच है वो करती हूँ, और जितना भी आप फीडबैक देते हो वो अपने मन में कहीं ना कहीं, बट मैं चाहती कि मैं थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस करूँ, मतलब मैं प्रैक्टिस करूँ उसमें कि मैं और अच्छे से पाऊँ, क्योंकि मैं मुझे पता है कर सकती हूँ, मेरे अंदर पैशन है वो करने का, तो म्यूट बट कर लो, थोड़ा सा क्या विपुल की म्यूट वजह कर से लो, या आपको अपने आंसर काम की वजह से मैं जो टाइम देना नहीं दे। म्यूट कर लो। अब आप आंसर सुन लो, ठीक है। सबसे पहला तो आप, you told me that you wanted to become a public speaker, am I right? Give me a thumbs up. Okay, if you want to become a public speaker, think like a public speaker, talk like a public speaker, live like a public speaker. All the speeches you are recording, you should have a clear audio strategy. आपके पास प्रॉपर माइक्रोफोन होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर लैपटॉप गैजेट होना चाहिए। इस पे इन्वेस्ट करो, पैसे खर्चो इस पे, धीरे धीरे इस पे पैसे खर्चो, इन्वेस्ट। ओके, दिस इज गोइंग टू पे यू बिग टाइम। All right. The second is, when you are thinking of becoming a public speaker, start reading more. आज मैं 2 बुक्स शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ये बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। भूल जाओ दुनियादारी, जो नौकरी कर रहे हो कर लो, जहां से 20, 25, 50 हजार, लाख रुपए कमा रहे हो कमा लो। अगर पब्लिक स्पीकिंग की फील्ड में आना है तो अपना ये ट्रांजिशन खुद करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो बडी इज गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज इट्स योर ड्रीम, यू गॉट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। And the third suggestion which I wanted to give you is, there are a lot many reasons to give excuses to anybody. If you really want to learn, trust me, when you are going through this kind of transformation course, this is one of the best platforms you can do this transformation and transition also. Think about it. So instead of thinking of excuses, start thinking of possibilities. Instead of thinking of difficulties, start thinking of what can I do right now. बस इतना सोचना शुरू कर दो, आपके पास सारे सोल्यूशन आएंगे, धीरे धीरे दिमाग चलेगा। हमें जब भूख लगती है ना, मुझे मैगी चाहिए, मैगी तो नहीं है, मुझे मैगी चाहिए, पैसे खुले तो नहीं है, मुझे मैगी चाहिए, अरे एटीएम कार्ड नहीं मिल रहा, मुझे मैगी चाहिए, खानी है मुझे मैगी, कैश विड्रॉ कर लो एटीएम जाके, मुझे मैगी ही खानी है। फाइनली कैश विड्रॉ हो गया, भैया 2 पैकेट मैगी के देना। थैंक गॉड, आज मैगी बन गई, मैंने मैगी खाई, क्योंकि मुझे मैगी चाहिए थी, इसलिए कैश भी विड्रॉ हो गया, पैसा भी आ गया हाथ में। और कहाँ पैसा पड़ा था, मेरे ब्रेन ने बताया। व्हेन यू थिंक ऑफ पॉसिबिलिटीज, आंसर्स विल कम टू यू, सॉल्यूशंस विल अपीयर। कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं मैं आपको, सच बात बता रहा हूं, सच्ची बातें बता रहा हूं, ठीक है ना। कोई फिलोसफिकल बातें नहीं करता मैं, सच बात। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू मोटिवेट यू, आई एम नॉट अ मोटिवेटर, I am just trying to give you the right direction. That's my job. All the best. All right. Last question from Jasmeet, and then we're gonna wrap up. हाँ मुकेश, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास अभी। तुम्हारे Jasmeet, you want to ask something? Fillers, I have already answered. Gaurav Jain, thanks for asking. Gaurav, I have already answered about fillers. Yeah, Jasmeet, you want to ask something? एक आप लोगों की ना स्क्रीन बड़ी हिलती है जब आप बात करते हो। मोबाइल को आप आराम से रखो सामने और बिल्कुल अपने हैंड्स फ्री करो, जेस्चर्स दिखने चाहिए हैंड के, ठीक है? ओके, जसमीत, यू वांट टू आस्क समथिंग? प्लीज म्यूट, अनम्यूट। Not able to unmute. Okay, wait a second. Yeah, now you are on unmute. I cannot hear you. Okay, we'll come back to you. You can type your message if you want to ask anything. Okay, one last question from Kawaljeet Kaur. Kawaljeet, unmute करो आप। हेलो कवलजीत बोलो। हेलो सर, हेलो मैम, सर कैन यू हियर मी? Sir, I am feeling so good because sir, you and ma'am give me a very nice family. So
today I'm just speechless how to say about my happiness. So you can see just tears in my eyes because sir, after a long time, uh, I'm feeling that I'm in my family. That is too nice, sir. And कंवलजीत अभी टाइम थोड़ा कम है, आपकी फीलिंग्स की हमें and कदर है. sir, no sir, that platform you given, sir, some problems I want to share. Sir, in when I was in class third, that was my first public speaking. So I was too small. So my mother was guiding me on that time. So I have no fear, sir. But after long time, this is restart. So sir, I was so bold. I never think this that something is impossible. So everything is possible, sir. But due to कंवलजीत, some, come to the but question. sir, my boldness and I want to express from my face and my voice, म्यूट everything, करो, sir. म्यूट करो, ऑन म्यूट करो. So sir, I want, but आ गया क्वेश्चन, आ गया थोड़ा क्वेश्चन आ गया, सुन लो, आंसर सुन लो. फ्रीक्वेंसी बड़ी तेज हैगी है. द मोमेंट you half question you complete, I catch the frequency very quickly. I got your question. Okay, the answer to your question is, if you have public speaking fear, you have to work on it. That's one. And how you will work it? You will work it by speaking. Second, you need somebody to mentor you. You need somebody to give you feedback. I'm already doing that. You're on the right platform. Third, if you are not able to express, that is something related to your confidence. And थोड़ा जरा कॉन्फिडेंस है वो पब्लिक स्पीकिंग करके आएगा. आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पब्लिक स्पीकिंग करके आएगा, वो भी पब्लिक स्पीकिंग से ही जुड़ा हुआ है अल्टीमेटली. आंसर टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच यू आर आस्किंग राइट नाउ इज पब्लिक स्पीकिंग ओनली. बोल दे रहो. Keep on exploring, keep on talking, keep on reading. Start giving the food. The brain's food is reading, thinking good thoughts. Give that food to your brain all the time, and you will see you will speak better, and one day you will become a motivational speaker. You have to be in practice, you have to be in the habit. Everything will come to you. It's a gradual step. I always say this, it's not about the sprint, it's about the marathon. Yeah, you want to ask something else, Kawaljeet? We are wrapping up because we are already ahead of time. Yeah. sir, I want to say that जैसे कि मैं आपको बता दूं सर कि जिਵੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬੀ ਲਾਈਫ ਜਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਐਡ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਪੜਿਆ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈंने ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਸਪੋਕਨ ਦੀ तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਸਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਬੋਲ ਲਾਂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਨੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ we ਤੇ are, ਸਰ ਮੈंने I have already answered this in the ਸਰ beginning मैंने of this ट्राई session. किया बट हाउ आई हैव टू स्पीक मैं किस तरह बोला सर नहीं, लोड केड़ी नहीं है. लैंग्वेज किस तरह I'm coming to that, Kawaljeet. See, what you need to understand is that if you can express your thoughts and your ideas in any language, the language is not a matter of concern. If you can convey your message effectively in Hindi, good for you. Punjabi, good for you. English, good for you. Language has nothing to do with public speaking. And if you really सर want to वन become a थिंग motivational speaker in India, यस I would यस strongly सर recommend to speak in Hindi, सर not English. सर आई एम जस्ट मैं कुछ करना चाहती हूँ सर और मैं Karo, करूंगी सर karo, और all the मुझे best. गाइड आई विल सर वन वन मोर क्वेश्चन सर वन मोर sir here no I am doing everything from myself sir you know this sir and sir when I speak
in English. I hear some motivator speakers, so like Sandeep Maheshwari and so Singh. So they talk when they express their feelings. They use both languages, English or Hindi mix. So can I do that, sir? Yeah, you can do that. English कर सकते हो. So I am expressing my feeling. So language is not important. Ki I can say in English and Hindi Language both. language is important, but language is not important at that level where you are deciding whether to go for English or Hindi. If you And can convey your ideas in English, use Hindi and English mix in India as a motivational speaker, that's your goal. So your yes, language and your comfort is to be in synchronization with your goal, which is becoming a motivational speaker. And if you can speak in English as a motivational speaker, that's a brilliant way to go for it. All the best. I've answered thank you, you, Kawaljeet. Yeah, okay. sir. Now I'll come. No, Kawaljeet, I'll come back to you. Okay, yeah, Mukesh. Okay, sir. हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते मुकेश। सर मुझे ना स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है काफी बार, स्पेशली व्हेन आई स्पीक इन हिंदी एंड स्पेशली विद पीपल आई एम कंफर्टेबल विद। ठीक है। जब मुझे लगता है कि मुझे काफी कुछ बोलना है या काफी कुछ एक्सप्लेन करना है उन लोगों को जिनके साथ मैं काफी कंफर्टेबल हूँ, जैसे कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है या फिर कुछ लोग बैठे हैं ग्रुप में, तो उस टाइम पे मैं स्टैमर कर जाता हूँ या फिर मैं बहुत ही फास्ट बोलता हूँ। मेरी रेट ऑफ स्पीच काफी फास्ट हो जाती है और काफी लोगों ने मुझे पॉइंट आउट भी किया है इस चीज के लिए। इसके लिए मैं तो आपको, हाउ डू आई, हाँ ठीक है, आई गॉट योर क्वेश्चन, आई एम कमिंग टू दैट आंसर। ऐसा होता है हमारी बॉडी में, जैसे ही एक स्थिरता आ जाती है, जैसे हम बोलते हैं when our body finds that relaxing position, when our body comes into that state of mind, when our mind comes into that state of mind, where our mind feels that now I'm relaxed, nobody can hurt me if I cannot hurt myself, nobody can instigate me without my permission, nobody can take my charge of happiness. ये स्टेट ऑफ माइंड जब आता है ना मुकेश, तो ये सेल्फ लव से क्रिएट हो जाता है। आई लव माई सेल्फ। ठीक है, तो इसका सबसे पहला स्टेप है लव योर सेल्फ, सेल्फ लव। सेकेंड, सेल्फ अलाइनमेंट। सेल्फ अलाइनमेंट क्या होता है मुकेश? तो ठीक है ना मुकेश? आर यू फाइन? आई लव यस यू सर, आई एम डियर। फाइन। नहीं, मैं बता रहा हूं कैसे करना है। आई लव यू मुकेश, सुन रहे हैं ना? आई लव यू माई डियर। चल खड़ा हो, हारना नहीं है, बहुत कुछ करना है अभी लाइफ में। यू आर हेयर फॉर अ पर्पस। व्हेन यू डू सेल्फ अलाइनमेंट इनसाइड यू, व्हेन यू क्रिएट दैट सेल्फ टॉक इनसाइड यू, यू टॉक टू योर सेल्फ सॉलिट्यूड में, शीशे के आगे, छत पे खड़े होके, वॉक करते हुए, पार्क में सैर करते हुए, अपने आप से बात करते हो ना, सेल्फ अलाइनमेंट करते हो, प्योरिटी क्रिएट होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होती है, क्लैरिटी क्रिएट होती है। अबे म्यूट कर लो आप। क्लैरिटी क्रिएट होती है, थॉट क्लैरिटी बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ अलाइनमेंट, देन थर्ड इज थॉट क्लैरिटी। थॉट क्लैरिटी जब आप क्रिएट करते हो तो आपको सब चीजों के बारे में पता लगना शुरू हो जाता है। ओके, सो सेल्फ लव, सेल्फ अलाइनमेंट, थॉट क्लैरिटी, व्हेन यू अटेन दीज थ्री थिंग्स, इसको करने के टूल्स होते हैं। जैसे मेडिटेशन इज वन टूल, ब्रीदिंग इज अनदर टूल। ब्रीदिंग के बहुत सारे फायदे हैं। पब्लिक स्पीकिंग में ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल है। हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए होता है और हमारी पूरी बॉडी वाटर से बनी है। डू यू एग्री? यस सर, आई एग्री। ठीक है, तो हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है और हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन पास होता है हमारे यहाँ से, ये वाला लोअर टमी से जो नीचे एरिया होता है ना, जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं, यहां से पास होता है, ऊपर आता है यहाँ से। ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है बहुत सारी। मेडिटेशन और ब्रीदिंग टेक्निक्स आर द टूल्स टू एक्टिवेट योर सेल्फ अलाइनमेंट। हमारी बॉडी का जो बेस्ट कॉम्पोजिशन क्रिएट हो जाता है, जिसे हम ऑल चक्रास एक्टिवेट, थोड़ा सा गहराई में जा रहा हूँ, ओके, डीप डाइविंग इन ऑल चक्रास एक्टिवेटेड। अगर कोई पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है ना, जितना हो सके ना। रीना जी थोड़ी आवाज आ रही है, म्यूट करो, गल कर लो म्यूट करके जितना करनी है। 7 चक्रास आर देयर, 8 चक्र हमारा ऊपर होता है। ठीक है,
हमारे जो चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं ना, जब, मुकेश सुन रहे हो ना मेरी बात ध्यान से, यस सर, या यस आपके लिए बोल रहा हूँ मैं, यस जब सर। हमारे 7 चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारी एनर्जीज क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जब हमारी एनर्जीज क्रिएट हो जाती है, सुपर पावर बन जाते हैं हम। गॉड बिकम्स ह्यूमन, ह्यूमन बिकम्स गॉड, देयर इज नो ह्यूमन, देयर इज नो गॉड। समझ आ रही है बात? मैंने बोल दिया जो बोलना था, ये तो गहराई वाला गॉट आंसर इट था। सर। अगर यस इस सर। बात को समझ गए तो बहुत कुछ पकड़ लोगे मेरी बात से। अब आते हैं सिंपल ह्यूमन वाली बात पे। ह्यूमन वाली बात ये है कि अगर आपको स्टैमरिंग और स्टटरिंग को हटाना है, तो इसको हटाने के लिए जितना ज्यादा रिलैक्स वे में काम करोगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे हम कोई भी चीज करते हैं, आपको सबसे अच्छा क्या लगता है जब आप रिलैक्स होते हो, तो क्या करते हो आप उस टाइम? मैं सर ट्रैवलिंग के बारे में सोचता हूँ, मतलब आई लव आप ट्रैवलिंग। ट्रैवल करते हो, गेम्स खेलते हो, ठीक है, गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हो, डेट पे जाते हो, कॉफी पीते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, शादीशुदा हो तो सेक्स भी करते हो, ठीक है, और उसके अलावा क्या करते हो? अच्छे अच्छे थॉट सोचते हो, बुक्स रीड करते हो, ठीक है, और क्या करते हो? मैगी बनाते हो, कुकिंग करते हो, घर के बर्तन खुद धोते हो, ठीक है, सारी चीजें होती हैं। जब हम इस तरह के माइंडसेट में आ जाते हैं ना, तो हमारी बॉडी रिलैक्सेशन होती है। इसको बोलते हैं सेरोटोनिन, हमारे ब्रेन केमिकल है, सेरोटोनिन क्रिएट करते हैं। आपकी बॉडी का मेजर कंपोनेंट सेरोटोनिन क्रिएट करेगा, तब आपकी रिलैक्सेशन ज्यादा हाई रहेगी। तो आप सारी एक्टिविटीज वो करें जिसमें आपका मैक्सिमम सेरोटोनिन क्रिएट हो। समझ में आ रही है ये बात? तो जो मैक्सिमम सेरोटोनिन क्रिएट होगा, उससे क्या होगा? आपके ब्रेन केमिकल बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, आप रिलैक्स रहेंगे, और आप जब बोलेंगे आप तब भी रिलैक्स रहेंगे। स्टटरिंग खत्म, स्टैमरिंग खत्म, नंबर 1। नंबर 2, आपकी प्रैक्टिस, बोलने की आदत, बोलना जितना ज्यादा बोल सकते हो बोलो। इसका आपको टूल दे रहा हूं, आप किताब पढ़ते हो? आई एम आस्किंग यू। आई यूज टू सर, बट अब नहीं पढ़ता, मतलब कितने पढ़े लिखे हो आप मुकेश, इफ आई कैन आस्क यू? आई एम अ ग्रेजुएट इन बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, अभी आप नौकरी करते हो? यस सर। किस फील्ड में हो आप? सर मैं टेक्निकल फील्ड में हूँ, ठीक वर्क है, फॉर डेल एज ए टेक सपोर्ट। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग का काम ज्यादा है, राइट? दिमाग ज्यादा यस सर। लगाते हो? सर रीजनिंग का भी और बोलने का भी है। आई हैव चीजें नो वी चीजों हैव में फ्रेंड्स लॉजिक इन। ढूंढते हो ना, ये ऐसे हुई तो ऐसे क्यों नहीं हुई, लॉजिक ढूंढते हो ना चीजों में, ठीक है। तो अब आप लॉजिकल रीजनिंग के काम में हो, तो आप कोशिश ये करो कि आप थोड़ी सी रीडिंग भी पकड़ो, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी फील्ड को पकड़ो, ठीक है, उससे आपका EQ क्रिएट होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस क्रिएट होगा। ये सब चीजें बड़ी कनेक्टेड हैं, इसलिए ये सब बातें कर रहा हूं मैं। अदरवाइज मैं आपको क्या बोलता, आप ये 3 चीज फॉलो कर लो, आपकी स्टटरिंग हट जाएगी। आप ऋतिक रोशन की लाइफ के बारे में पढ़ लो, स्टटरिंग हट जाएगी। वो ज्ञान नहीं दे रहा हूँ आपको। अभी जो बिडेन जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है यूएस का, आपको पता है 10 साल तक वो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम में था, इस तरह से स्टैमरिंग करता था वो। उसकी वीडियो देखना जाके, पुरानी बायोग्राफी पढ़ना जो बिडेन की। 10 साल तक स्टैमरिंग में रहा है वो, उसने स्टैमरिंग को ओवरकम किया। मेरे एक फ्रेंड है, उनका IBN7 न्यूज है, जो अभी कोई दूसरा चैनल बन गया है, उनका बहुत ही इंस्पायरिंग इंटरव्यू आया था। उन्होंने भी स्टैमरिंग को ओवरकम किया, लेकिन वो पूरा ओवरकम नहीं कर पाए। अभी भी जब थोड़ा सा फास्ट बोलने की कोशिश करते हैं, माइंड फास्ट हो जाता है ना, और ब्रेन तक वो सिग्नल आते आते स्लो हो जाता है, तो एकदम स्टैमरिंग क्रिएट हो जाता है। एग्जैक्टली सर, मेरे साथ भी वही चीज होती है। ठीक है, तो माइंड को रिलैक्स रखना है और माउथ को रिलैक्स रखना है। रिलैक्स रखने के लिए सेरोटोनिन लेवल हाई रखना है। सेरोटोनिन लेवल हाई रखने के लिए क्या करना है मैंने बता दिया। यस सर। 10-15 चीजें बताई हैं, कहीं तो फिट होते होंगे ना। अब वो सबसे ज्यादा वो करो, सेरोटोनिन लेवल क्रिएट करो, नंबर 1। सेकेंडली, बुक रीडिंग की हैबिट में आओ। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, जितना ज्यादा रिलैक्स होके बोलोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और तीसरा, सबसे मुश्किल काम, मैं जब बॉडी बिल्डिंग करता था आज से 6-7 साल पहले, तो मेरा जिम जो ट्रेनर था मुझे बोलता था, बस बस एक रैप और, बस एक रैप और शहरी सर, बस एक रैप और। शहरी सर, कर लिया एक रैप, बस मेरे कहने पे एक रैप और, एक बस लास्ट, एक लास्ट और। आपने मेरे कहने पे कर लिया ना, तो एक लास्ट और कर लो, इसके बाद नहीं करना। कर लिया सर, एक लास्ट और। सर यार क्या बात, एक लास्ट और, लास्ट और। अब आ गया आधा, तो आ गया। ओह, 4+ करवा दिया मुझे। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, हम जब गिव अप कर देते हैं, गिव अप करने के टाइम पे हमारा ब्रेन गिव अप करता है। तो अगर हम अपने ब्रेन को कम्युनिकेट करेंगे, यानी कि जब आप अंडर स्ट्रेस होगे, अंडर प्रेशर होगे, अंडर प्रेशर यानी कि जब आपको स्टैमरिंग हो रहा होगा जिस टाइम,
उस टाइम अपने ब्रेन को बोलोगे लिसन, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, चलो बोलते हैं। अंडर स्ट्रेस में अपनी लैंग्वेज क्रिएट करो। अंडर स्ट्रेस में जो लैंग्वेज क्रिएट होगी, जब आप ब्रेन को कम्युनिकेट करोगे, वो पावर देगी आपको। आई होप दीज टिप्स विल हेल्प यू मुकेश। Yes, sir. Surely I'm gonna work on these things. ठीक है, Thank you, great. sir. All right, thank you everybody for joining in. It's more than 1 hour, and I'm really sorry for taking out more time. And I'm sure I've answered most of your questions which you had in mind. We have spoken about voice modulation, fillers, voice range. We spoke upon content creation. We spoke upon uh, the different components of voice modulation. We spoke upon your experiences. So thank you very much, all of you, for joining in. And one very, very quick announcement that all of you who are consistently creating videos, keep on creating the videos. जहाँ पे आपको कुछ query आती है, please drop in the query in the group. I'll be more than happy to help you and extend my support to you, because I'm on a mission to create 1 million public speakers by 2030. All right. This is a great platform. It's a big community. And I can only say that it has just begun, my dear friends. And for those of you who have not applied for the certificate, you can please fill up the form. I think Kara was telling me that she has been following up. So any one of you who has not filled up the form, Google form, please go ahead and do that. It will be for your future references, will help you in your professional connections as well. That's it from my side. Thank you very much for joining in. Keep on creating your videos. And all I would like to say is good night, Shabak Khair, and see you soon. And every Sunday, we're going to keep these mentorship sessions to give you a lot of inputs, and we can have a lot of interactions like this. The recording has been done. It will be shared on the WhatsApp group channel very soon by one of my team members. Thank you, everybody. Good night. Bye-bye. Thank you, sir. Thank Good you, sir. night. Bye.